अगर तुम वेट करो 1:30 बजे तक ना तो यार तुम वैसे ही चैंपियन हो यार। मतलब मुझे ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। तुम लोग रियल डेडिकेटेड फैन हो रियल क्रिकेट 2020 रियल क्रिकेट पूरी सीरीज के। और क्या आज होने वाला है तुम्हें पता है? द मैन हिमसेल्फ, सीईओ ऑफ रियल क्रिकेट नॉटलेस मोबाइल, फाउंडर ऑफ रियल क्रिकेट इज गोइंग टू कम इन जस्ट अ वाइल। तुम्हें थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हम कुछ अच्छे अच्छे सवाल उनसे पूछने वाले हैं। अब सवाल क्या होने वाले हैं तुम बता दो कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तुम्हारे सवाल होंगे और जवाब किनके होंगे? द फाउंडर ऑफ रियल क्रिकेट, मुझे पता है तुम सबके दिमाग में क्या सवाल है, रियल क्रिकेट 22 कब आएगा। वो तो मेरा सवाल होने ही वाला है, उसके लिए तो क्वेश्चन सोचना ही मत। लेकिन उसके अलावा तुम क्या पूछना चाहते हो? आज कभी आप कंपनी के हो कि अरे यार कम ऑन, कसम से यार कौन आने वाला है सेलिब्रिटी? ओके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम यार सलाम। गेम कब आ रहा है? बात करेंगे सहजता के साथ, विनम्रता के साथ, आराम से। ठीक है, टेक अ डीप ब्रीथ इन एंड वेट फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स बिकॉज आई थिंक 1:30 पे आने वाले हैं वो लाइव। एंड उसके बाद हम बात करेंगे, इट विल बी अ गुड कॉन्वर्सेशन जहाँ पे हम मेन क्वेश्चंस को पिक करेंगे एंड आई ट्राई टू कवर ईच वन ऑफ योर्स क्वेश्चन। सो गेम कब तक आएगा? हाँ, दिस इज गोइंग टू बी डेफिनेटली वन ऑफ माई क्वेश्चन विच आई विल बी आस्किंग हिम। Okay, what else? Release date? Yes, this is one of the best question which I'll ask. This is going to be the first question which I'll ask. इसके अलावा और क्या? हाँ, रिक्वेस्ट। ठीक है ठीक है, चलो यार। आई थिंक इट्स टाइम। लेट्स गेट कनेक्टेड गाइस। आर यू गाइस रेडी? ऑडियो वगैरह सब बढ़िया आ रहा है ना? लेट मी जस्ट कनेक्ट गाइस। हेलो। Hey, So let's start this discussion. So जिनको नहीं पता अनु सर कौन है, ही इज अ फाउंडर ऑफ रियल क्रिकेट। ही इज ही इज अ मैन बिहाइंड एवरीथिंग। सो अनु सर, आपको कैसा लग रहा है? मतलब आपने कभी सोचा था कि आप इतने सारे अचीवमेंट करने के बाद देयर विल बी अ डे व्हेन यू विल गेट इन चांस टू टॉक टू आस्क अ बिगेस्ट यूट्यूब? ये वाला डायलॉग मैंने कहीं पे तो सुना है, राइट? थोड़ा ओरिजिनल बन जा। आई थिंक दैट वुड बी राइट। जस्ट किडिंग। ओके, सो सर अभी बहुत सारे लोगों के सवाल है कि रियल क्रिकेट 22 कब आएगा। मतलब दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन। अभी जैसे मैंने चैट स्टार्ट करा ना, एवरीवन इज जस्ट आफ्टर दिस क्वेश्चन। सो आई थिंक you are the best person who can answer this question. So what do you have to say on this? सो बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए रादर, राइट? एंड हम लोग देर रात तक काम करते बैठे हैं। वी बीन वर्किंग लेट इनटू द नाइट, सो आई थॉट when someone suggested the idea ki like go live because you don't go on social media much, right? And I said, well, social media पे जाने लग गया तो गेम कौन बनाएगा, kind of thing. But I said कि ठीक है, जाना भी है अगर तो let's go at some weird hour, क्योंकि हम इतने दिन से रहे तो उसको भी थोड़ी देर एक आध बार जगा देते हैं, right? But to answer your question, right? Um, we'll be going sort of live in the next hour or so, right? So how this is going to work is we're going to submit to the Google Play Store as part of an open beta program, right? Just like we did during RC18. The only difference being that हम लोग सिर्फ 10 लाख लोग, in the sense 1 million lucky, okay? This is not got anything to do with हम लोग select नहीं करते, right? It just is Google Play's algorithm. We have to just specify a number, and we're able to sort of, Google Play will randomly allow 10 lakh people, 1 million people to sort of get access to the game. We'll keep that number for a little while, a day or two, maybe, depending on how it goes. But the idea behind that, the reason why we're doing that is, it's a new game. So we want to look at, we've also set up some new infra, IT infra at the back on the servers, all of that, make sure it's all running smooth. And जैसे हमको पता चल गया कि सब सही चल रहा है, right? तो हम आगे और users को खोलेंगे, right? So that's the plan, and we'll be pressing the button in about an hour. So I think a lot of you might wake up in the morning if you're lucky, and you would get access to the entire game. All right. So that's the news from my side. And I think that's the biggest news because ये वो क्वेश्चन है जिसके लिए I think अभी कोई 1200 लोग 1200 people are already watching this live, and I think this
it just cannot get better than this कि अगले 1 घंटे में you can actually play the game which you have been waiting for since so long. But okay, so we have the news. Game is coming very soon. Let's move to the next question. चलते हैं कि न्यू गेम होगा, ओल्ड गेम होगा कि अगर अगर न्यू गेम है तो वो फील होगा कि नहीं होगा जो रियल क्रिकेट एक्चुअली इतने टाइम से देता आया है. So what can we expect? I mean, as a user, what can we expect from this Real Cricket 22? So every game developer has जो भी गेम बनाता है उसका एक तरीका होता है, उसका एक स्टाइल होता है, right? So we move away because that has worked for us, over the last 9 years. That has worked for us. So when you play the game, you will know you're playing a real cricket franchise game for sure, right? Of course, just as we have done over the past few years, we've strived a lot. We've worked hard to improve in a lot of areas where we thought we were, not good enough, and that'll continue. So you will see a very real cricket game, but it will feel different in a lot of ways. We've added a lot of components. I think earlier today there was a whole short map feature that came out. That sort of will allow you to customize the way you want to play. It will give you access to about almost 400 and crazy amount of shots, right? That you would be able to sort of access. And yeah, I mean, fielding and things I've mentioned, I think, over my podcast, right? Those are the things that we've really strived to work upon. Okay, so we'll continue to have that feel which we had in Real Cricket 20 or the series of Real Cricket. That's another good news. And we'll go to another humor. अभी कुछ टाइम से एक और humor बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है कि 4 GB, 4 GB. If you have 4 GB and above, you can enjoy this beautiful game. अगर उससे कम है 2 GB, 3 GB, then you surprisingly, or I don't know, you will not be able to play this game. So what do you think, sir? What Real Cricket will offer to 2 GB or 3 GB, and क्या है इसके पीछे? I mean, is this even real? Yeah, so I think a lot of the news that's out there, we sort of put it out there through our sources on purpose. And the reason behind that was, of course, we've always tried to sort of support, as many devices as possible. But it just came to a point where we had to make a compromise or, choose for this production cycle to go on for another 3-4 months. And we thought that, you guys have waited long enough. So I think in order to maintain the fidelity of the game in terms of what we wanted to put out there, we thought that we wouldn't be able to compromise right now beyond a certain point.